Taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? लेट्स से बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन. लेट्स से दैट द फिक्स्ड प्राइस is x. The fixed price is x. So the cost that you have to pay for 1 kilometer will be 1x plus something. The cost you have to pay for 2 kilometers will be 2x plus something. ठीक है? So the cost paid for m kilometer, the cost paid for m kilometer will be c equal to m times x plus something, m times x plus something. Let call that something as y. इसको हम बोल देते हैं y. तो अब पहला इक्वेशन हमको कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर दिया है, अगर आप ध्यान से पढ़े तो, for a distance of 10 km the charge paid is 105. For a distance of 10 km the charge paid is 105. तो हम लिखेंगे 105 इक्वल टू 10x प्लस y. ये हो गया आपका पहला. सेकेंड क्या बोला इसमें? सेकेंड इसमें बोला है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर कॉस्ट पेड इज 155. तो ये हो गया आपका 155 इक्वल टू 15x प्लस वाई. ठीक है, तो ये है आपके पास इक्वेशन 1, ये है आपके पास इक्वेशन 2. सो व्हाट विल हैपन ना, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को अज्यूम करिए. मैंने अज्यूम करा ये वाला इक्वेशन. सो 10x प्लस वाई इक्वल टू 105, y इक्वल टू 105 माइनस 10x. सो सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 105 माइनस 10x in equation 2. So 15x plus y equal to 155. 15x plus 105 minus 10x equal to 155. मैंने क्या किया? मैंने y को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया. Now let's solve. So 15x minus 10x plus 105 equal to 155. So 5x equal to 155 minus 105. मैंने 105 को इस साइड शिफ्ट कर दिया. So 5x equal to how much? 50. x equal to 10. x equal to आ गया 10. Now substitute x equal to 10 in any of the equation. Substitute x equal to 10 in any one of the equation. So where will I substitute? I will substitute it here. I will substitute it over here. So y equal to 105 minus 10 times 10. So y equal to 105 minus 100 equal to 5. ठीक है, ये आ गया 5. So x is 10, y is 5. X is 10, y is 5. Now let's consider this equation again. C equal to x is 10, so 10m plus y is how much? Y is 5. Now it says कि if I go for 25 km, if I travel for 25 km, what will be the cost? The cost here will be cost equal to 10 times 25 plus 5. 10 times 25 plus 5. So C equal to 250 plus 5. C equal to 255. बहुत अच्छा और बहुत important question है ये. Please do it again and again at home. It's an important question.